के आधार पर चलने की हमारी आदत है। हम आगे चलेंगे, इसमें सुधार करते हुए और कदम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद श्री गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। और अब माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आपसे आग्रह उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायाधिपति श्री NV रमन जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश अजय रस्तोगी जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी जी, राजस्थान के माननीय चीफ जस्टिस शिंदे साहब, आवाज नहीं आ रही है? हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, शांति धारीवाल जी, महेश जोशी जी, महेंद्र चौधरी जी और तमाम हमारे उपस्थित अन्य माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य साथीगण, मैं सबसे पहले अपनी ओर से आप सबकी ओर से CDI साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कटारिया जी ने कहा, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि रमणी साहब यहाँ पर CDI के रूप में हमारे इस पवित्र प्रांगण में पधारे हैं, जिसका अपना एक महत्व होता है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंदर। और CP जोशी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक तो आज शानदार जो म्यूजियम बना उसका उद्घाटन करवाया और दूसरा उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। CP जोशी जी ने बहुत सारी बातें कही और मैं समझता हूँ कि आज वास्तव में मैं ये मानता हूँ कि CDI साहब को हम लोग सुने हैं, क्योंकि हम लोग रोज अपने विचार प्रकट करते हैं लोकतंत्र के बारे में, और जब विचार प्रकट करते हैं तो ध्वनि निकलती है राजनीति की, नहीं चाहते हुए भी। आज एक मौका है जब मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी ध्वनि निकले जिसमें लगे कि आज बातें आपकी प्रेजेंस में हुई है। आप मेरे विचार जानते हैं कि हालात क्या है देश के अंदर, लोकतंत्र की स्थिति क्या है और देश की दिशा में जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए, ये सब बातें अपन रोज करते हैं। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर के ज़माने से जब संविधान बना तो बहुत लंबी बहस हुई कि प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अंतर्गत गवर्नमेंट हो। संसदीय लोकतंत्र का जो महत्व है, आज दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रकार से लोकतांत्रिक देश या डेमोक्रेसी कायम रही है देश के अंदर 75 साल के बाद में भी। कटाई ठीक करे थे, एक वोट से हार के बाद फिर ही सरकार चली गई। इंदिरा जी चुनाव हार गई, एक सेकंड नहीं लगाया मुरारी भाई देसाई को ले जाकर सत्ता सौंप दी। तो एक पूरी दुनिया को विश्वास हो गया कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 135 करोड़ की आबादी अब तो हो गई है, उस मुल्क में डेमोक्रेसी चल सकती है जहाँ अनेकता में एकता है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियाँ हजारों है, धर्म अलग अलग है, जातियों की कोई सीमाएं नहीं है। इतने बड़े मुल्क को एक रखना, अखंड रखना ही बड़ी चुनौती थी। और CDI साहब कई बार विचार प्रकट करते रहते, मैं पढ़ता रहता हूँ। आज सुबह मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने अपने विचार प्रकट किए थे, जो आपको मैंने कोट करके किए थे। चाहे अमेरिका में भाई आप गए तब भी आपने कहा कि जो हमारे लोगों ने, पुरुषों ने जो सेक्रीफाइस किए हैं देश के अंदर, हम सब जानते, गांधी जी, किसानी जी में जिस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान और उस वक्त लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, बड़ी बड़ी लंबा फहरिस्त है। उन सब का जो त्याग बलिदान है, उनकी रक्षा करने का दायित्व आज
देशवासियों पे है, ये आपकी भावना मैंने पढ़ी। मुझे अच्छा लगा कि आज वास्तव में हम सब की ड्यूटी है, वर्तमान पीढ़ी की भी, कि आने वाली पीढ़ियों को हम लोग ये देश एक व अखंड मजबूत बना रहे, ये सौंपे जाए। पिछले साल में अनुभव में आपने भी किया है, क्योंकि आप में कई लोग 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और ज़्यादा भी बार एमएलए रहे हैं, एमपी बने कई लोग। हम जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा मर्म है लोकतंत्र में कि आप लोगों की भावनाओं को विधानसभा में, लोकसभा में आप प्रकट करते हैं और उसके आधार पर बहस होती है, निर्णय होते हैं और फिर एग्जीक्यूटिव उसको लागू करती है, जुडिशरी सुनिश्चित करती है। सबकी अलग अलग भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं, और भूमिका निभाते आ रहे हैं हम लोग। डॉक्टर सीपी जोशी की चिंता भी वाजिब है। थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट होता है, हम पढ़ते थे अखबारों के अंदर किस प्रकार से कई बार लक्ष्मण रेखा पार होती है तो बहस शुरू हो जाती है। मेरा मानना है कि अल्टीमेटली हम लोग ये मान के चलें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फॉर्म है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, जो अमेरिका के अंदर है। और इसी के अंतर्गत हमें आगे बढ़ना है, आगे देश को चलाना है। और मेरा मानना है कि उसमें कमियाँ भी आएगी, खामियाँ भी आएगी, उसको दूर करने का काम ही हमारा ही होगा। तो बाहर के लोग आके उसको दूर नहीं करने वाले हैं। देश हमारा आज़ाद है और आज़ादी का हम लोग स्वाद ले रहे हैं 75 साल से। कहाँ से कहाँ पहुँच गया मुल्क सबको मालूम। हर क्षेत्र में हमने प्रगति करी है, वो देश गवाह है और हम सब लोग गवाह हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक मैंने आपको कमेंट पढ़ा था कि किस प्रकार से सीजीआई जस्टिस रमणा जी साहब ने कहा कि संसद में सार्थक बहस नहीं हो रही है, इससे पता नहीं चल पाता है कि बिल लाने या कानून बनाने का क्या उद्देश्य था। इसे लगातार अदालतों में मामले आते रहते हैं। इनका मतलब मैं समझ पाया हूँ जहाँ तक कि पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, आपने पार्लियामेंट के बारे में बात की हुई, मैं दूसरी बात समझता हूँ ये पार्लियामेंट के लिए लागू होती है और असेंबली के लिए लागू होती है। ये अच्छी स्थिति नहीं है जो आपका कहना था। अगर बहस कोई बिल आता है तो उसमें बहस इस कदर हो, इस रूप में हो, इस गहराई से हो, जिससे कि उसका अर्थ क्या था, उसका मर्म क्या था, वो भावना प्रकट हो, उसके बाद में बिल पास हो। तो आपका मतलब है कि बिना उसके जब आता है तो ज़्यादा फिर कोर्ट केसेस होते हैं। मेरा मानना है कि ये हम सबका प्रयास रहता है। और राजस्थान के बारे में तो सीपी साहब ने कह ही दिया, खाली यूपी की बात नहीं है, कई असेंबली ऐसी है देश के अंदर जहाँ बहुत कम दिनों में ही कोई 4 दिन, कोई 6 दिन, कोई 8 दिन वाली असेंबली भी होगी देश के अंदर। तो है ये स्थिति। पर जो कुछ भी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं उनको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि मैं आज अपनी सीमाओं में रह कर के बात करना चाहता हूँ, ठीक है ना। और आज सीपी जोशी साहब ने कहा कि मैं तो लोगों ने तो बाहर फेंकना पड़ता है, आज इनके पास वो डंडा नहीं है और मेरे पास भी आज ये मंच नहीं है कि मैं यहाँ देश के हालात को मैं व्यक्त करूं कि मैं क्या फील करता हूँ, आप सबको मालूम है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। और न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमणा भारत के मुख्य न्यायाधीश है। आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें उसके पहले आपका एक संक्षिप्त परिचय आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आप दिल्ली उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर पदस्थ श्री रमणा का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कृषक परिवार में हुआ।
पत्रकारिता से करियर की शुरुआत करते हुए वकील के रूप में सघन अभ्यास करते हुए आपने संवैधानिक, आपराधिक सेवा और कानून में विशेषज्ञता हासिल की। आप नागरिक अधिकारों को कायम रखने के लिए जाने जाते हैं। महिला अधिकारों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने तक के विभिन्न फैसलों का आप हिस्सा रहे हैं। आपको अपने बीच में पाकर हम सब बहुत गौरवान्वित हैं और आपको सुनने के लिए लालायित भी है। आपसे अनुरोध उद्बोधन के लिए न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमणा, भारत के मुख्य न्याय। Honorable Dr. C.P. Joshi, Speaker of Legislative Assembly, Rajasthan. Sri Ashok Gehlot ji, Honorable Chief Minister. My brother Justice Ajay Rastogi, Brother Justice Dinesh Maheshwari, Brother Justice S.S. Shinde, Chief Justice of High Court of Rajasthan. Sri Gulab Chand Kataria ji, Honorable Leader of Opposition. Brother and sister judges of the High Court. Honorable members of the Parliament, honorable members of the Legislative Assembly of Rajasthan, media persons, other distinguished guests, ladies and gentlemen, Khamma Gani. Before I begin, I would like to convey sincere thanks to Sri C.P. Joshi, the Honorable Speaker of the Legislative Assembly of Rajasthan, for extending invitation for this event. I'm happy that the Rajasthan branch of the Commonwealth Parliamentary Association has taken this initiative, which will promote healthy debate on issues of relevance. I've been told that it is the first time that a member of the judiciary has been invited to address such an august gathering in the chambers of the legislature. I feel doubly honored. The land of Rajasthan is known for its rich culture, history, and heritage. The people of Rajasthan have preserved centuries-old culture and traditions so well. The moment you arrive in Rajasthan, you are instantly transported to a different era. From the time I landed here, I am experiencing the warmth of the people of Rajasthan. There is no better honor than being hosted in the house of the great people of Rajasthan. This magnificent institution came into existence after the merger of 22 princely states. Prominent leaders and freedom fighters like Hirala Sastri, Balwant Sinha Mehta, and Jainara Vyas not only shaped the future of Rajasthan, but also future of India by being a part of the Constituent Assembly. The people of Rajasthan have proved themselves to be alert, active, and responsible participants in the democratic process. Legislative bodies are conceived to be the most transparent bodies under the Constitution. I am happy to note that the Rajasthan Legislative Assembly is reaching out to the people through the live streaming of its proceedings. The next of the proceedings is also available online for ready reference. Indeed, these efforts are commendable. As a student, I was overwhelmed by the aura and the change-making powers of the legislature. I was deeply inspired by the kind of service that the lawmakers used to render. Whenever I saw the grand epitome of the Legislative Assembly building at Hyderabad, I used to feel a strong connect. It invoked great pride and respect. I must admit that I had the dream of walking in the footsteps of the legendary lawmakers of that time. But destiny desired differently. Today,
through this invitation, you have fulfilled my dream of being in the House, even though it is for a few moments. Honorable members, you are the ones chosen by the great people of Rajasthan. You carry the hope and trust of your electorate. Democracy is not about choosing a state or its head. Democracy is about defining our identity. Democracy is about deciding our freedoms, rights, and duties. Democracy is about climbing our destiny. Like Dr. Ambedkar once described, I quote, "The soul of democracy is the doctrine of one man, one value," unquote. For India, democracy was not a choice, but a habit and a necessity. Looking back in time, it may be seen that our democracy is natural derivative of British colonial era. But a closer look at the state of the other colonies will indicate otherwise. The fact that Indian parliamentary democracy thrived to transcend into the world's largest democracy is attributable only to the people of India. The idea of self-rule, the governance is deeply embedded in the administration of our villages. This is so core to the identity of the community and culture that this idea has survived the onslaught of time and modernity. The Indian ethos was supplemented by the Western ideology of revival of awakening. True, the Western philosophy of self-determination, freedom, and liberty had a great influence on the Indian freedom struggle. Our leaders brilliantly Indianized these concepts and turned every son of the soil into a freedom fighter. The story of the Indian freedom struggle is the story of the people's movement. Independent India's fate was linked with the Constitution, which was the creation of the Constituent Assembly. The Constituent Assembly was the first representative body of the people of India. After 2 years, 11 months, 17 days of deliberation, the Constitution of India was finally adopted by the people of India. We must note that India was meant to be a parliamentary democracy and not a parliamentary government. For the core of idea of democracy is representation. Dr. Ambedkar cautioned that by parliamentary democracy, we can never infer rule by majority. He stated the majority rule is untenable in theory and unjustifiable in practice. The framers decided to opt a representative democracy. A representative democracy is about effective representation. It is where the minority is not overwhelmed by the majority. Parliamentary democracy was a way to preserve our plurality, the multitude of our identities, and you have a future built on consensus. The success of our democracy is largely attributable to people's faith and participation in the system. The collective memory of the struggle for independence has installed in the people the tradition of participation in politics across all geographic and demographic lines. India, with 17 general elections, still remains a relatively nascent democracy. We are still in the process of learning through churning. In these 75 years, no doubt we have achieved a lot, but the sad reality is that a vast of our people still do not have access to dignified living. Poverty, illiteracy, discrimination, intolerance are social realities. People continue to look for someone to relieve them from their daily sufferings. This duty to fulfill constitutional aspirations falls on all the three organs, the judiciary, the executive, and the legislature. In this context, the role of the lawmakers cannot be understated. You are not mere representatives of the people. Rather, you are the bridge between people's aspiration and the realization of the same. In the past 75 years, the story of growth and transformation of India
can largely be attributed to its progressive laws and policies formulated by forward-looking lawmakers. In India, de facto, you are obliged to play a dual role, one as a member of your political party, the other as an individual voice of the people you represent. Your role is not limited just making of the laws and policies. You know very well that even after laws are formulated, the intent benefits do not reach the largest population of years together. People expect the leaders to ensure that the laws get implemented. You are accountable to the people. Your performance, conduct, actions towards fulfilling their promises, everything gets judged. Every time you are in the field, people not only come to you with their problems, they seek answers as well. As their leaders and representatives, they want you to air their issues and grievances. In a society such as ours, where the vulnerable lack of voice, it is expected that you will be their voice and bring their troubles to the notice of the relevant authorities. As I said on multiple occasions, if every wing of the state functions with effectively, efficiently, responsibly, then the burden on others would reduce considerably. If the general administration is carried out efficiently by the officers, a lawmaker need not toil for ensuring basic facilities to his electorates. But when people with problems approach you, you cannot simply say no. You have to act. But be it a ration card, building a school, building a road, people expect you to sort it out. These multiple roles invariably take a toll on your primary legislative responsibility. I hope I am proved wrong. But sadly, the country is witnessing a decline in the quality of legislative performance. The contemporary political commentary is generally critical of the fewer sittings of the legislature and underutilization of its potential. Yes, the Constitution does not specify the minimum number of days for which the State Assembly must meet every year. However, there is no doubt that the citizens will definitely get benefited by longer engagements. Being charismatic leaders, you enjoy public support in your own right. You have the power to shape public opinion and bring progressive social changes through public mobilization. In a world as divided as ours, it is you and you alone who can hold the society together. Building a peaceful and inclusive society is not just a matter of public administration, but also a duty of a statesman. You are a reflection of the people's aspiration. Let morality of the Constitution guide you in the right direction. After all, you are all role models. Strengthening parliamentary democracy demands strengthening the opposition as well. We have a form of government where the executive, both political and permanent, is accountable to the legislature. Accountability forms the core principle of democracy. I have on several occasions highlighted the significance of parliamentary debates and parliamentary committees. In fact, I used to look forward to the legislative debates. Particularly, the leaders of the opposition used to play a stellar role. There used to be a lot of mutual respect between the government and the opposition. Unfortunately, the space for opposition is diminishing. We are witnessing laws being passed without detailed deliberation and scrutiny. In the absence of a thorough debate involving all sides of the House, as a judge, at times I wonder as to how does one trace the legislative intent behind the enactments. Instead of engaging in a meaningful debates for furthering democracy, politics has become acronymous. The diversity of opinion enriches political polity and the society. Political opposition should not translate into hostility, which we are sadly witnessing these days. These are not signs of healthy democracy. Strong, vibrant, and active opposition helps to improve the governance and corrects the functioning of the government. In an ideal world, it is the cooperative functioning of the government and the opposition which will lead to a progressive democracy. After all,
Project Democracy is a joint effort of all the stakeholders. And a year ago, on Independence Day, I expressed my views on a decline in the quality of debate and, at times, even the lack of debate in the legislative bodies. My observations were perceived in some quarters as a criticism of lawmakers. No, it is not criticism of either lawmakers or the legislatures. I have highest regard and respect to the lawmakers and the legislative houses. When I expressed these sentiments, my only concern was the burden imposed on the judiciary because of the imperfection in lawmakings. If the bills are thoroughly and dispassionately debated and all the well-meaning suggestions are accommodated, we will have better laws. Laws without deficiency have saved the judiciary from the avoidable burden of litigation. On this occasion, I have a suggestion to make. Lawmaking is a complicated process. One cannot expect every lawmaker to have a legal background. It is essential that members of the legislature have quality assistance from the legal professionals so that they are able to contribute to the debates meaningfully. The Honorable Speaker may consider providing the assistance of qualified law clerks to each one of the MLA. We as judges are also assisted by law clerks in our day-to-day court work. Let me assure you, it will really help you all. Coming back to the subject, the reality is that even today, the people are not aware of the functions of each wing of our democracy. They cannot distinguish one from the other. To enforce checks and balances envisaged in the Constitution, we need to promote constitutional culture in India. When I say constitutional culture, I mean spreading of awareness about the roles and responsibilities of the individuals and the institutions. Democracy is all about participation. Now coming to the judiciary, one of its major roles in the interpretation of legislation and as a gaffeler, increasing state intervention in the lives of the population, dissatisfaction among public about the other two wings, and raising awareness of rights have increased the public expectation on the judiciary. In a modern democracy, the people expect that the court to stand as a counterweight to the legislative and the executive excesses. This gains gravity, particularly whenever the opposition is missing in action. Reasons apart, the expedient intervention of judiciary is aimed to improving the quality of lives in the people. A short while ago, I had the privilege and honor of inaugurating the museum in the presence of my brother Justice Ajay Rastogi and Justice Maheshwari and Justice Shinde and other brother and sister judges of Rajasthan High Court, as other distinguished dignitaries present here. This effort to portray the journey of Rajasthan through a digital museum is commendable. The interactive exhibits in the museum will generate curiosity, particularly among the youth. Apart from displaying the historical and political narrative of Rajasthan, this museum also highlights the rich heritage and tradition of the state. I am happy to inaugurate this museum. This is not a mere building, this is a bridge between our past and future. Recently, I got an opportunity to visit the Independence Hall in Philadelphia, United States. I was impressed to see how realistically they have portrayed their transformative journey. It is essential that every nation maintain such an authentic record of its milestone. Portrayal of democracy as a living organism which evolves with time and social change. Through such efforts will serve as a reminder of the past. I hope the lessons from the past guide us along the right course in the future. Speaking from these solemn premises, I have something to say to the youth of this country. You have the most important role in our democracy. I urge the youth of today to be touched with the past and the present issues. In today's world, true empowerment lies in true awareness. Be aware, be informed, and it is only you who can decide your destiny. The future of this nation depends on your active participation in public life. Before I end, in spite of several aberrations, our democracy has stood the test of time. But it is time
to think beyond. It is time to seek qualitative democracy where we constantly seek to strengthen and improve our institutions and democratic values. We need to be respectful to people's wish and command. We should learn lessons from the past. History is a witness. Whenever a government fails to stand up to the scrutiny or expectation of the people, they have expressed their will in the form of change. It is the people who will ultimately set the course of the future of democracy in India. I trust the power of the people. I quote on this occasion Dr. S. Radhakrishnan, "The voice of the people must be carried by the government, and the parliamentary democracy is the best instrument for the ascertainment and the expression of the public mind. Parliament acts as a liaison between the people and the state. It is the function of the parliament to express, not to suppress, public opinion and social dissent, if any," unquote. Before I conclude, I must thank the Honorable Speaker, Dr. C.P. Joshi, the Honorable Chief Minister, Sri Ashok Gehlot, Honorable Leader of Opposition, Sri Gulab Chand Kataria, Honorable Ministers, Honorable Members of the Assembly of the for hosting me and giving this opportunity. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमणा जी। आज के आयोजन की स्मृतियां बरसों बरस आपके जहन में रहे, उसके लिए हम डॉक्टर सी.पी. जोशी जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, आप माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमणा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आज के इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं माननीय न्यायाधिपति श्री अजय रस्तोगी जी, श्री जोगेश्वर शर्मा, व्हिप ऑफ द अपोजिशन पार्टी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, आप श्री अजय रस्तोगी जी, जोगेश्वर गर्ग जी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, आप उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में ही मौजूद है माननीय न्यायाधिपति श्री दिनेश माहेश्वरी जी, श्री बलवान पूनिया जी, लीडर ऑफ द CPIM लेजिस्लेटिव पार्टी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, आप श्री दिनेश माहेश्वरी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और माननीय न्यायाधिपति श्री संभाजी शिवाजी शिंदे हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में ही मौजूद हैं। श्री नरेंद्र नागर जी, मेंबर ऑफ द CPA एग्जीक्यूटिव कमेटी। आप बोलूं क्या? आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, माननीय अतिथियों के विराजे रहने तक अपनी सीटों पर हम विराजमान रहें। और माननीय संयम लोढ़ा जी से हम अनुरोध करना चाहेंगे, आभार व्यक्त करें। आप सचिव हैं CPA राजस्थान शाखा के। हमारे खास मेहमान भारत के मुख्य न्यायाधीश N.V. रमन्ना साहब, हमारे विशिष्ट मेहमान न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी साहब, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी साहब, राज्य के मुख्य न्यायाधीश शिवाजी शिंदे साहब, हमारे विधानसभा अध्यक्ष
डॉक्टर सीपी जोशी साहब, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया साहब, सभी उपस्थित मेहमान के रूप में माननीय न्यायाधिपतिगण और माननीय सदस्यगण, अपने सारगर्भित उद्बोधन में आपने विधायिका की स्थिति और चर्चा में भागीदारी के प्रति उदासीनता की ओर जो ध्यान आकृष्ट किया है वो वास्तविकता के बहुत नजदीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे राजनीतिक दल माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने जिस और ध्यान आकृष्ट किया है उसे सकारात्मक रूप से लेंगे और विधायिका में विधेयकों पर प्रभावी चर्चा हो सके इसके लिए अपने अपने दल को तैयार करेंगे। मान्यवर, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के जिस पवित्र सदन में आपका जो उद्बोधन हुआ है उसका एक गौरवशाली इतिहास है। अनेक प्रगतिशील और क्रांतिकारी कानून इस सदन ने पारित किए हैं। जमींदारी उन्मूलन कानून, सती प्रथा के खिलाफ कानून, पंचायती राज में पिछड़े तबके, वंचित तबके को आरक्षण देने का कानून, सूचना के अधिकार का कानून और अभी इस मौजूदा विधानसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून, ऑनर किलिंग के खिलाफ कानून, इन सब के माध्यम से राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम राजस्थान का ये सर्वोच्च सदन मान्यवर लगातार करता रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको कि व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए जब हम सदन में सरकार से हार जाते हैं, जब हम नौकरशाही के सामने थक जाते हैं, तब लोगों को न्याय दिलाने का हमारे सामने एक ही रास्ता होता है, वो न्यायपालिका है। विगत 3 दशक के सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में अनेक बार, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो और चाहे कानून व्यवस्था की दृष्टि से वंचित तबकों को न्याय दिलाने की बात हो, जब जब नौकरशाही ने और सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, हम अदालत की शरण में गए और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि तमाम मुद्दों पर हमेशा न्यायपालिका से हम न्याय प्राप्त करने में सफल रहे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस कृष्णा अय्यर से लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रणवीर साहब वर्मा तक, और उनके बाद भी विगत 2 दशक की जो न्यायपालिका में माननीय न्यायाधीशगण रहे हैं, जनहित याचिकाओं के माध्यम से राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में न्यायपालिका ने अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई। मैं आज इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा कि सामान्य तौर पर न्यायपालिका के माननीय गण विधायिका या इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने से परहेज करते हैं, लेकिन आपने साहस दिखाया है एक विधानसभा में आकर के उद्बोधन देने का। ये राजस्थान के 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं हृदय के अंतरतल से आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी माननीय न्यायाधीशगण जो आज इस सदन में आपकी आने की बदौलत आए हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जैसा प्रतिपक्ष के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि कैसे हम चर्चा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से नागरिकों के हक में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान कर सकें। एक बार पुनः आपके आगमन पर मैं सीपीए की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संयम लोढ़ा जी। और आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। हम आप सभी से एक विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे, अपने मुख से हम राष्ट्रगान को उच्चारित अवश्य करें। मातृभूमि को सम्मान।
एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे, माननीय सदस्यों से निवेदन है कि माननीय अतिथियों के विराजे रहने तक हम सब अपनी सीटों पर विराजमान रहें।